Now we have Amit Jain with us. Amit Jain will be addressing the members shortly. Just to give a brief profile of Amit Jain, he is co-founder of Ashika Wealth Advisors. He was past country head of Reliance Capital Group companies where he had been in the leadership team for almost a decade. He is also on the board of Nexus for Asia Pacific, US Government Incubation Center. He has served Indian banking and financial service industry for 18 years and worked with marquee names like HDFC, ICICI, ABN AMRO Bank. He has done a PGDBM, CFP, and he has also a postgraduate diploma in financial advisory from IIBF. He has mentored startups from IITs, IIMs, DTU, DU, etc. Hence, I welcome Amit Ji to address the audience. Amit Ji, stage is all yours. Yeah. Thank you, Neeraj. Thank you, Nandaji. Thank you, everyone on the dais, for inviting me for this event. I'm sure I'm dealing with one of the most eminent professionals in Indian fraternity, which is chartered accountants. And I wish this session going forward can be a mutually learning session for all of us. So, Sumit, you had a lot of questions that why market is going up, why low P, there are some stock which are at low P, there are a lot of stock which are on high P, right? The world, I'll give you the reason. The stock market or any asset class in the world, it goes up only because of three factors. Number one, liquidity. Number two, trust in that asset class. Number three, the compliance and regulations around that asset class. अगर ये तीन चीजें हैं तो एसेट क्लास काफी हद तक ऊपर जाता है और यही रीजन है कि अगर ये चीजें नहीं है तो एसेट क्लास विल कम डाउन primarily. And give you a reason, first of all, I try to cover the liquidity part for the world. The world has changed in 1971 because the US President Mr. Nixon, he has removed the gold standards from the world economies. So before 1971, a country can print only that amount of currency, which amount of gold they have in their reserve. But after 1971, that standard was removed from the world, and now any economy or any country can print any amount of money, irrespective whether they have that gold reserve at the back or not. So it's a free money economy, what I can say, post 1971. And that is the reason after 1971, the all asset class start going up. And I think equity is one of the asset class, which we have seen that the economy is almost 30-year low, but stock market is lifetime high. That is the only reason which we all can say that why market is lifetime high, and there are a lot of stocks which are trading at a P of 100 when we see that a lot of at least 2 crore jobs are lost during COVID phase second, right? After at least demonetization, we lost almost 8 crore jobs in informal sector. But still the market is going high and it is not impacting the stock market. Give you a brief that before 2008 financial crisis, the balance sheet of US Fed was close to $700 billion. In 2017, the balance sheet was close to $4 trillion. So there was a jump or almost 600% in the Fed balance sheet. That amount of money they printed during that 9 years frame. If the money gets printed, that money is going to inflate all the asset class in the world. Right? And if as an economy, I have a better relationship with US, then my inflation or my asset class will go a little higher compared to Russia or Iran, which are passing through a US sanction. Okay. So that is the reason that we have seen that, and this liquidity from US, particularly a US central bank and US government, is driving all those economies which are closely working with the US. And that is the reason we are seeing that US Indian stock market is at lifetime high today. Right? So that's a precise reason for any asset class. Now, coming back to the 1971, when we started this free money economy, right? Ashokji was talking about in 1980s. He cleared the chartered accountancy and he would have invested some amount into stock, and Sensex was close to 100, right? And today Sensex is close to 53,000. So if you observe, in 1980s, the US dollar versus INR was close to 10 rupees. And today it is close to 75. So you can straight away say that if you would have invested into US dollar in 1981,
you would have got 750% return only by investing into dollar, which is the safest asset class till now. And that's what the people presume today. Dollar is safe. At financial advisor, as a wealth advisor, we don't presume that, because today is the peak for US dollar in the world. You will see in next 20 years, US dollar may decline by another 40% from here on, because that's a peak for US economy. If you go back to history, till 1800, China and India were contributing 50% of the world GDP. Right? But post 1800, I think it was overtaken by Britain when they ruled the world for at least 25 to 30% of the world, then followed by US after 1944 Bretton Woods Agreement. Right? The power has moved from eastern part of the world to the western world. But now, when I am talking about 2020 onwards, this power is certainly going to come back to the eastern world today. That's what we foresee, and that's what we advise. Because today in the world, India does not have any alternative, and what we call in our term called TINA factor. And that TINA factor is there is no alternative to India. Because if I want to invest in anywhere in the world as a global fund manager, I don't have choices today. Either I'll invest into US market, I'll not invest into Europe because that's aging. I will not invest into Gulf because Gulf is completely into gluttons now post the US policy on the Gulf and a lot of internal war which are happening in. Where I'll invest? I'll invest in India. Probably I'll invest in probably China. If I have a better relationship with them, I'll go to Vietnam. I'll go to Indonesia. Only handful of countries are left which has a GDP growth. And that is the reason that the world money is chasing India, because there is no alternative to India. And that is the reason that we are seeing the stock market is lifetime high when we are seeing Indian economy at rock bottom in terms of GDP. I believe a real portfolio management services is when you invest across all asset class at right time you take an entry and right time you exit or you rebalance. And you also do that investment in proper weightages. So what happened? Because typically we have 5 to 6 real estate, we have 5 to 6 asset class across the world. Number 1, we have real estate. Number 2, we have equity markets. Number 3, we have bonds. Number 4, we have fixed deposit. Number 5, we have gold. Number 6, we have industrial commodities like copper and zinc. I think number 7 nowadays what we keep hearing is Bitcoin. Although I don't believe that's an asset class, I think it's a speculative asset class. But still I'll count it because I think there are a lot of people who might be interested to know about Bitcoin and what is the future of it. So I'll cover later in the Q&A. But these are the 7 asset class which you need to choose. If you choose an asset class, you don't need to see the past performance. Number 1, when you design your portfolio management services for your own portfolio, because to me, you have to have a right weightage in each asset class with right entry and exit point. If you enter at a wrong entry point, then you will not make money. Bajaj Finance, which Ashokji was talking about, it is also an outcome of EMI culture, right? Because the people start developing a habit of credit, which was not there. Because if you go back to 2003, the people will say, don't take debt, right? But today, people take higher and higher debt and spend money. But before 2003, we never had that culture, right? So if we take timing from 2003 till 2010 or 11, all the asset class has gone up, be it stock market, be it real estate, be it gold, or be it anything. Right? Good time. In 2008 and 9, we had a crash, but it was a short-lived crash and recovered immediately. In 2009-10, we have recovered, the market has recovered immediately the way the market has recovered post-COVID-19, when the investors thought the world is ended. But the world has not ended, the world has started for the equity market. That was the best time to invest, right? When there's a virus in the market, what we say, right? So, from 2003 to 2010, we have seen a bull run across asset class. But smart investors, even in that time, has timely switched from real estate to stock market or to some other asset class. The people who has not switched timely across all asset classes and they have not rebalanced their portfolios, right? They have actually burned their hands. Because in real estate, you have not seen any great return from last 10 years. Either the property prices are stagnated or they are in a downward trend, right?
So this is the power of switch timely, and this is what is required for a successful portfolio management services. So you should understand the cycle of each asset class, and based on that you should preempt that cycle rather than doing a post-mortem. Today what happened? Whenever someone wants to invest, he will go to valueresearchonline.com, see which are the top performing mutual funds. Okay, this mutual fund has given me 80-90% return, let me invest into it. Believe me, there are much lesser chances that that mutual fund which has already given you 80 or 90% return will give you 50% return in the next 3 years, because that cycle has already played out. So ideally, as investors, we should not focus on past performance. Rather, we should focus, or we should preempt the asset class cycle, the sectoral cycle, the economic cycle, and then take investment decisions on that side. And if we do that, then of course we can make a difference to our investment as chartered accountants, even to our clients' investment, because we are not banking on the past performance of any asset class. We are preempting that asset class cycle. This is what we advise when we talk about portfolio management services. Now, if we talk about these asset class which we have just discussed, the real estate is the biggest asset class in the world today. I think the overall size is close to $400 trillion. When we talk to bonds and fixed deposit, the overall asset class cycle is the overall asset class size is close to $270 trillion, right? If we talk about the equity market, the overall world size is close to $90 trillion, out of which $45 trillion is US market, which commands 50% of the world stock market today. That's a size. If you are a smart investor, when you know that post COVID-19, the world has gone into doldrums, and the world central government and the central banks has printed money like left, right, center. Alone, US Fed has printed more than $4 trillion in last 1 year. $4 trillion, I can say that the US Fed has created another India in last 1 year, right? And if central bank prints so much of money, then that money is going to drive the asset class across the globe. If I take Europe and Japan also in account, the put together all these three countries have printed $9 trillion. Where this money is going to grow? There are only two countries in the world which grow. Number one, China. Number two, India. So this money is going to grow, is going to chase the growth of these economies only. And we are the most beneficial country in the world today in the anti-China sentiment. Now the world is following China plus one policy, and they want to create a alternative to China in next 10 years. Because today China commands almost 50% of the manufacturing in the world, right? And I think they want to create a parallel economy to China, which only India can offer, because we are the only country which has two dividends. Number one, we are democratic. We are transparent, it means. Number two, we have a demographic support. I think 70% of our population is below 35. If we channelize this energy rightly, I'm sure the world will be behind only India. And that's what we say, the TINA factor. There is no alternative to India. And the beauty about all Indians is we have a lot of hunger to grow. If you go to Western world, they are settled. They are ages. They will prefer life to enjoy. But India people want to work still hard. And they want to make it happen thing. So I think India is the country. The same way we have a TINA factor for equities today. Because when in a world, when the money is almost free, at US, you can raise money at 2% to 3%, right? And you can get into Apple stock and you will get 3% return in a day. So what cost of money you borrowed? You borrowed the money at 3% per annum, and you got that return only by investing into 4 stocks called Facebook, Apple, and couple of 2 more. You are getting that return in a month. Then you can speculate. Why not? Right? So the world asset class is getting into a bubble, particularly stock market, because it's very liquid market. It's very liquid asset class. You can invest any point of time. You can exit any point of time. It is not like real estate. Right? You entry and then you take a 10-year view. And the world today, or world economies and the world governments, or I'll say the world central bank, don't have a choice to raise rate of interest even if they want to. Because today, none of the businesses can sustain higher rate of interest.
whether it's a US economy, whether it's Indian economy, or whether any economy in the world, because the world debt has doubled in last 10 years. In 2008 crisis, when the financial crisis happened, the global debt of the world was close to $130 trillion. And today it is close to $270 trillion, which has doubled. If you raise rate of interest, then who is going to serve this debt? So whether we like it or we don't like it, the rate of interest are going to be low here. And that is the reason we advise all investors to slowly move money from fixed deposit and bonds to equities and gold. If they don't do it now, they will repent in next 10 years. And when the world is investing in India, we should not shy away in investing into our Indian stock market. For sure, I personally, our organization, we all stand by India because that is the only growth engine which is going to drive the world. And I'm sure the way we were dominating economy in the world before 1800, before the Britishers came to India, we are going to get back to it next 150 years for sure. We advise large family offices above 100 crores. So minimum ticket size which we advise is 100 crores. And we are advising them to invest only in India. Don't go outside, right? Because the world is taking India and you invest into right sectors. India has talent. India has demographic dividend. India has democratic dividend, which no other country can offer in a due. Probably China can give you growth, but China cannot give you democracy. Right? So this combination is India, and that is the reason that world is chasing India today. As a new age fund manager, we have invented something new. So we say, if you have a high risk appetite or even a reasonable risk appetite, whatever your age is, you should invest that proportion of amount into large cap stocks. I repeat, whatever your age is, you should invest that proportion of amount into large cap stocks because large cap always give you stability. With the rest of the amount, you should play in mid cap and small caps because they will become the next multi-bagger for you, and that will give a return of compounding. That will give you a return of compounding, which is called eighth wonder of the world. Right? So this is a new age. We don't believe in debt because, as I said, debt is gone. Debt will never revive back. You will not see a 9%, 10% rate of interest on FDs. At least in my lifetime, I am now 38. I'm sure I will not see that 9-10% in my lifetime, which my father has seen. Right? So people need to get away with that mindset of a fixed return. The people need to take little risk and they have to be little calculative in terms of their investment. If they don't do it, they are repenting now today when Sensex is 53,000. They will repent again in next 10 years when Sensex will be close to say a lakh or 1.5 lakh, wherever it is goes. Right? So people need to change their habits, right? From equities. And today I can buy SBI bond at 7.25%, 7.2% yield, which is giving me 50% higher return compared to FD with the same company, with the same amount of risk, if any. It's a good time. You should move your money from fixed deposit to gold. Because keeping 2035, and in fact we have given that statement in Forbes, that in 2035 US dollar will be down another 40% from here where it is today. Because it's a peak of US market or US economy, I can say so. Because from this point, only two countries will bounce back. Number one, India, of course. China, we will figure out how the geopolitical equations becomes next 2 to 3 years post COVID-19, dust settles. But India for sure is going to grow. In 1971, the gold rate per ounce was $35 an ounce. And today, the gold rate is $2,000 an ounce or $1,800 an ounce. So what happened? If you see that it's only 1 ounce of gold, right? Dollar has lost its value by 85% almost. So in 1971, you could have bought 1 ounce of gold at $35. And today for buying 1 ounce of gold, you need to spend $1,800. And if you take me a very straight answer, what I say in a lot of forums is that from 1971, the world is following a business model. The world economy is following a business model called currency depreciation. The world is following a business model called currency depreciation.
जैसे आपके बिजनेस में आपका बिजनेस मॉडल होता है कि मेरे को इतना प्रॉफिट, इतना रेवेन्यू यहां से आएगा, ये मेरा कॉस्ट है और ये मेरा खर्चा है, ये मेरा टैक्स है और ये मेरा नेट प्रॉफिट आएगा। एक बिजनेस मॉडल होता है आपका, इस मार्केट में मैं जाऊंगा, इसको मैं इस प्राइस पे करूंगा। ऐसी जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज हैं वो सब करेंसी डेप्रिसिएशन को फॉलो कर रही है, एंड गोल्ड इज अ लाइव एग्जांपल है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट। तो फ्रॉम $35 to $1,800 and the quantity remain the same, which is 1 ounce, right? Even in India, people say that gold has performed very well. They are wrong. The gold has not performed very well. Gold has performed only from $35 to $1,800 an ounce. The Indian currency got depreciated from 10 rupees to a dollar to 75 rupees a dollar. That's where probably we see the Indian rate of gold, right? But I'm sure now when we are the 5th largest economy in the world today, this depreciation pace is going to go down. Now from here on, Indian rupee will be more stable for next 15-20 years. I'm talking about Indian rupee will be more stable. Probably by 2050 we will be the one of the richest billionaires in the world. If I take another 30 years, I think India will rule the world after China, and this currency depreciation will stabilize because now we are the 5th largest economy. We are moving more towards a self-sufficiency, and I think the good thing which is done by present government is that they want to be independent on their arms and ammunition manufacturing as well, which is the key. And this is what made Russia and US a superpower way back in 1940s after World War. If you, I'm sure most of you are aware of the history that US became a superpower only after World War II, because they make them fought. They make them, all the countries fought. They disrupted European Union completely. They make them fight among themselves the way they have done in the Gulf today, right? They are making them fight, right? And they have supplied the arms to them. पहले लड़ाई कराना और फिर आर्म्स दे देना जिससे उनका सेल चलता रहे, right? Then probably 1940s they come up with the Marshall Plan, where the destroyed Europe was rebuilt by US on the US money, and US lended a lot of money to European Union. And I think the last EMI of that loan was paid by 2004 in UK, by UK. So that's US. They did it in Europe earlier with the World War II, and now they are doing it in the Gulf, right? But I'm sure the world understands these policies pretty well now, and US is almost at a peak, and in the next 5 years, that either it will be stabilized or it will go in a Japan way. The world is against China, and that social distancing from China will create a lot of opportunities for India. So we are extremely bullish, and we request everyone who is listening to this call, every chartered accountant, their clients, then don't miss the bus. I'll give you a punchline. Market will crash for sure. But दिक्कत वहां पे है कि मार्केट क्रैश होने के बाद उठे ना। ऐसा आपके हमारे लाइफ टाइम में होने वाला नहीं है। Please take it on recording. I am sure this is recorded, right? Sir, definitely. Yes, sir. Yes, sir. Recorded. Right? So you can quote me there. देखिए कोरोना ने भी बता दिया कि कोरोना के बावजूद भी मार्केट उठ गई है, इतनी फास्ट उठी है कि we can't think of that. $9 trillion प्रिंट हुआ ना सर। $9 trillion मतलब आपने 4 इंडिया को प्रिंट कर दिया, मतलब तीन इंडिया आपने खड़े कर दिए एक साल के अंदर। जापान ने, यूरोप ने और यूएस ने मिलकर। तो पैसा जाएगा कहाँ? ग्रोथ तो सिर्फ इंडिया में है, भूख तो सिर्फ इंडिया में है आगे बढ़ने की, और किसमें? बाकी सब तो सेटल्ड है, वो बीच पे बैठे होते हैं। बिल्कुल राइट। एक हर्षद मेहता वाला टाइम था, वो चला गया। जिसकी भी वो मेमोरीज हो वो उसको निकाल दे अपने दिमाग से, बिकॉज जो मैंने एक तीसरा फैक्टर बताया ना एक एसेट क्लास के ऊपर जाने का, नंबर 1 था लिक्विडिटी, नंबर 2 था ट्रस्ट। आई विल कम टू दैट फैक्टर। ट्रस्ट क्या होता है? मैं जब नॉर्थ इंडिया में बात करता हूं, आई स्टे इन मुंबई, व्हेन आई टॉक इन नॉर्दर्न इंडिया आई से वी शुड इन्वेस्ट 100 करोड़ इन दिस स्टॉक, राइट? वो घबरा जाते हैं, क्या जी तो हर्षद मेहता के टाइम में लगाया था कि हम तो डर गए। उनसे मैं बोलूं कि आपको 100 करोड़ इस रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में लगाने, वो फटाफट लगा देंगे। दैट्स अ मैटर ऑफ ट्रस्ट। वेयर डू यू ट्रस्ट? बिकॉज ट्रस्ट डिसाइड योर होल्डिंग पावर ऑफ दैट एसेट क्लास। अभी स्टॉक्स में क्या है? अजी मैंने अभी स्टॉक में लगाया, अभी ये जी 20% आ गया, मैं निकल जाता हूं। क्यों भाई? क्यों मल्टीप्लायर का वेट नहीं कर रहे आप रियल एस्टेट में पैसे लगाते हो 10 साल के लिए और स्टॉक में लगाते हो महीने भर के लिए। इज इट अ फेयर कंपैरिजन?
for the asset class? No, it is not. Right? So the second factor which decide the cycle of an asset class is the trust after liquidity. Trust, right. If you have trust in that asset class, you will hold it and you will build your own stories. On record, हमने अपने जितने भी इन्वेस्टर्स थे 100 करोड़ के ऊपर वाले, हमने उनको 16 जनवरी 2020 को मार्केट से एग्जिट करवा दिया था ऑन रिकॉर्ड, 16 जनवरी 2020 को, और हमने एंट्री करवाई थी 23 मार्च 2020 के अंदर, जब निफ्टी 7,500 आगे ऊपर था. Perfect. I think if you go on Google, you will find those videos as well. You search Amit Jain, Ashika Well, 23rd March video, you will find it. It is my office video only. And I told very clearly, this is a lifetime opportunity, don't miss out. But people were a little emotional that time. They were humanitarian ground पे अभी नहीं अमित जी, अभी ठीक नहीं है humanity के लिए and all that. They all miss the bus today and now they regret. Right? So आपको जैसे मैंने कहा कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं. नंबर 1, राइट एसेट क्लास. आपको उस एसेट क्लास के साइकिल को शुरू होने से पहले पकड़ना पड़ेगा. ठीक है ना जी, नंबर 1. नंबर 2, आपको सही समय पे एंट्री करके एग्जिट भी करना पड़ेगा. आपको इमोशनली अटैच नहीं होना उससे. और नंबर 3, आपका प्रोपोर्शन सही होना चाहिए. तो कई बार क्या होता है कि लोग ऐसी एसेट क्लास में थोड़ा कम पैसा लगाते हैं जो जल्दी से तेजी चल जाती है. जैसे आज आप किसी पूछो कि आपका कितना पोर्टफोलियो है, कि जी हमारा 50 करोड़ का पोर्टफोलियो है. कि अच्छा जी आप बाइफिकेशन दो. कह जी 40 करोड़ की तो रियल एस्टेट है जो पिछले 10 साल से बढ़ी नहीं. 5 करोड़ की एफडी और बॉन्ड है. अब 5 करोड़ का 3 करोड़ का म्यूचुअल फंड है, 2 करोड़ स्टॉक में है. अभी आप बताओ 50 करोड़ रिटर्न आएगा कैसे? आप बार बार हमारे को रियल एस्टेट का याद ना करवाओ. सर वो ठीक है, आई थिंक हम सभी के लिए, मैं भी स्टक अप हूं, ऐसा नहीं हूं व्हेन आई एम सेइंग इट, बिकॉज माय फादर ऑलवेज बिलीव इन ओनली 2 थिंग्स, इट आर गोल्ड और रियल एस्टेट. So I dislern something from him over a period of time when I built my career in stock market in Reliance and here in Ashika, कि भाई कुछ चीजें हमें लर्न करनी है, कुछ चीजें डिसलर्न करनी है, because world has changed today. And probably that bring me on the third point, what we call regulations. So liquidity number 1, number 2 आपका ट्रस्ट किस एसेट क्लास के ऊपर है, और नंबर 3 कि आपके कंप्लायंसेस कैसे हो रहे हैं उसके ऊपर. जैसे आज हर्षद मेहता वाला मार्केट नहीं हो सकता बिकॉज मार्केट बहुत रेगुलेटेड है. हर्षद मेहता के बाद तो सेबी बना था, एंड लोग अगर अभी भी उस याद को रख के, उस याद को ध्यान में रखते हुए आगे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो गलत चीज है सर. अब रियल एस्टेट में देखिए आप कि 2010 के बाद जब से सर्कल रेट इंट्रोड्यूस हुए दिल्ली के अंदर, कितना पैसा बढ़ा. क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट तो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट तो रियल एस्टेट है, पर रेगुलेशन ज्यादा आ गए तो पैसा चला गया वहां से. Am I fair? तो रेगुलेशन एक तीसरी एक ऐसी चीज है जो आपके एसेट क्लास के ऊपर या नीचे जाने में बहुत बड़ा रोल निभाती है. ठीक है, अब ये तो हुआ सर्कल रेट की बात. अब मैं बात करता हूं डीमोनेटाइजेशन के बाद क्यों रियल एस्टेट और क्रैश हो गया. रियल एस्टेट तो रियल एस्टेट है, एक्चुअली रियल है, बट ऐसा नहीं है. क्योंकि रेगुलेशंस जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं, और रेगुलेशन के बाद जो इजी मनी आता है वो एकदम में छोड़ के चला जाता है उस एसेट क्लास को. ये हमें ध्यान से समझना पड़ेगा. यहीं पे रेगुलेशन बहुत मैटर करती है. अब जो स्टॉक मार्केट के अंदर जब सेबी आया, आज इतने सारे कंप्लायंस रेगुलेशन आ चुके हैं, तो वो हर्षद मेहता वाले टाइम का जिसका भी खराब एक्सपीरियंस को छोड़ के अब आगे बढ़ना चाहिए. बिकॉज वर्ल्ड वाले तो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, बट हम अपने इंडियंस नहीं ट्रस्ट कर पाते. तो कहीं ना कहीं वी हैव टू बी कॉग्निजेंस ऑफ दैट फैक्ट. तो दीज 3 फैक्टर्स एक्चुअली डिसाइड कि कोई भी एसेट क्लास ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और इन्हीं के बीच में हमें बैलेंस करना है कि हमें कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, और किस वेटेज में हमें इन एसेट क्लास में अपने पैसे को डिवाइड करना है. अगर हमने ये कर लिया तो जो मेरी डेफिनेशन है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस की वो पूरी हो जाती है. एंड आई थिंक एंड आई गिवन यू द कंप्लीट ब्रीफ कि ये जो वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट या वर्ल्ड का एसेट क्लास मार्केट है, ये 1971 के बाद ही चलना शुरू क्यों हुआ. उससे पहले 1929 से लेकर 1952 तो डिप्रेशन चल रहा था वर्ल्ड के अंदर. क्यों? क्योंकि आपने फ्री पैसे को प्रिंट करना शुरू कर दिया यूएस फेड ने. गोल्ड आप पे हो ना हो, अगर आप अमेरिका हो तो आप पैसे प्रिंट कर सकते हो, अगर आप जापान है तो आप पैसे प्रिंट कर सकते हो. जापान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां डेट इज टू जीडीपी की रेशियो 300 गुना है, 300% है. ठीक है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं द सेनिटी विल कम. आई जो
लोगों को डर लगता है आज फटेगा, कल फटेगा, परसों फटेगा, या एक महीने बाद या एक साल बाद ये नहीं फटेगा, क्योंकि इसके पीछे एक ऐसी चीज है जो पैसे को क्रिएट करती है, और वो है सेंट्रल बैंक, यूएस फेड। हम सोचते रह जाएंगे कि ये महंगा है, सस्ता है, ये 100 की पी का, ये 150 की पी का, ये 20 की पी का है। वो फेड पैसा प्रिंट करता रहेगा, फ्री में 2% पे देता रहेगा, और लोग यहां स्टॉक मार्केट में लगे 100% कमाते रहेंगे हर साल। उसको तो 98% बच ही गया ना जी, एफआईआई को। तो वो आप और मैं फंडामेंटल स्टडी करते हैं, वो फंडामेंटल नहीं करते। वो तो अपने ऑप्शन में पोजीशन लेते हैं, पहले डिलीवरी में कैश मार्केट में स्टॉक ले लिया, उसके बाद ऑप्शन में उसको हेज कर लिया, उनके पैसे आराम से बन जाते हैं। आपके बने ना बने, हमारे बने ना बने, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वी हैव टू सी इन दैट डायरेक्शन ओनली। तो ये बबल तब तक बस्ट नहीं होगा जब तक या तो कोई यूएस का डोमिनेंस खत्म नहीं करेगा, नंबर 1, जो शायद चाइना करने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना वही चीज कर रहा है जो यूएस ने 1970s में की थी, जब उसने पेट्रो डॉलर शुरू किया था। जब यूएस को अपने डॉलर को पूरे वर्ल्ड में फैलाना था, तो स्मार्टली उन्होंने क्या प्लान किया, दे हैव टाइड अप विद सऊदी अरेबिया कि भैया आप जो भी पेमेंट लोगे वो आप डॉलर में लोगे। अब जिसको भी ऑयल खरीदना है वो डॉलर में पेमेंट करेगा, तो डॉलर तो अपने आप चल पड़ा ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चाइना ये चीज करने की कोशिश कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू, तो अब यूएस को लग रहा है कि ये मेरी पोजीशन ले सकता है, दैट्स अ थ्रेट। तो ये एसेट बबल तभी बस्ट होगा जब हमें यूएस का ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा, नहीं तो ये एसेट ऐसे ही चलता रहेगा, यूएस फेड पैसा प्रिंट करता रहेगा और मार्केट इलॉजिकल लेवल पे जाता रहेगा। वी हैव टू लिव विद दैट, वी आर टू स्मॉल टू इम्पैक्ट यूएस फेड टुडे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। आपको ये देखना है कि गिवन दिस अजम्पशन यूएस फेड पैसा प्रिंट करता रहेगा, मुझे कौन से एसेट क्लास को चूज करना है, देन आई एम अ स्मार्ट इन्वेस्टर। With this, I'll conclude my session on this. Thank you. Any questions? I'm open for any question on any geopolitical question, any economic question of any economy in the world, any stock market question, any bond, any gold, any question I'm open for all the chartered accountants. And I think if Neeraj has questions, Neeraj can ask with 2-3 questions. Then we can. Yes, sir. Amit bhai, a very scintillating presentation. Neeraj will take the questions and we'll take it forward. Thank you, Amit. Thank you, Amit. We'll surely take lots and lots of questions with you. I will request members, they can post their queries in chat box and they will start taking questions with Amit. Amit, to start with, I will ask you a question. What are the common mistakes that you have observed with your experience that investors, HNI investors make while they select their portfolio management services or while they manage their portfolios on their own? The biggest, although they do 2-3 mistakes, but the biggest mistake with the investor do is they see the past performance. You cannot invest in any asset class which has performed very well in the past. You always have to find out undervalued sectors, undervalued asset class and invest into them. Just see that uska regulation comes, just for example real estate, right? What is the transaction cost? स्टॉक मार्केट में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मेरी कॉस्ट है केवल से 25 पैसा इंक्लूडिंग ब्रोकरेज वन टाइम। वही मुझे अगर रजिस्ट्री करके रियल एस्टेट को खरीदना है, टैक्स देना है, 10 देना है, तो मेरी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ही करीबन 8 से 9% बढ़ जाती है, राइट? सो वी नीड टू सी कि एक तो मुझे किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है, उसकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी है, नंबर 2 अगर मैं उसको चर्न करता हूं तो उसकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी आती है, और नंबर 3 मुझे पास्ट परफॉर्मेंस में नहीं जाना है। मुझे ये देखना है कि जो यूएस फेड ने इतना पैसा प्रिंट किया है ये किस सेक्टर में जाने वाला है, किस एसेट क्लास में जाने वाला है, और मुझे उसको प्रीमियम करके इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि valueresearchonline.com पे जाके पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड देख के मुझे उसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। बिकॉज आई एम श्योर जो चीज चल चुकी है उसका और चलने का समय मुश्किल होता है। जैसे दिल्ली से, जैसे आई ऑल्सो हेयर्स फ्रॉम दिल्ली, ऑल्दो आई स्टे इन मुंबई फॉर लास्ट 13 ईयर्स, पर मेरे रूट्स दिल्ली के हैं, तो मुझे पता अगर ऐसे ही होता तो चांदनी चौक सबसे चाणक्यपुरी से ज्यादा महंगा होता है दिल्ली के अंदर, पर ऐसा नहीं है, राइट? तो हर चीज का आपका एंट्री पॉइंट है, हर चीज का आपका एग्जिट पॉइंट है, राइट? एंड वी नीड टू फॉलो दैट प्रिंसिपल फॉर एनी इन्वेस्टमेंट। Amit, we have seen that Sensex goes up, markets goes up, but sometimes investors की portfolio ऊपर नहीं जाते या म्यूचुअल फंड्स की NAV ऊपर नहीं जाती। So why do you think this happens? देखिए, दो इसमें एक ही आंसर है इसके अंदर। जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो हम निफ्टी को देखते हैं या हम बीएसई सेंसेक्स को देखते हैं,
सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स और निफ्टी में है 50 स्टॉक। ठीक है, 50 स्टॉक में भी जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो है रिलायंस इंडस्ट्री का, एचडीएफसी बैंक का, एचडीएफसी लिमिटेड का। अगर ये 3 स्टॉक लगभग 30% का वेटेज रखते हैं, लगभग 27 से 30% का वेटेज रखते हैं, अगर ये 3 स्टॉक ऊपर चले जाते हैं तो आपको लगता है सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर चला गया। जबकि मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स या एचएनआई इन्वेस्टर का जो पैसा म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है वो लगा हुआ है आपके मिड कैप स्कीम्स के अंदर या लार्ज कैप के अंदर, और लार्ज कैप के अंदर भी उनका जो स्कीम है वो कम से कम 40 से 50 स्टॉक में लगाता है। तो अब क्या हो रहा है कि निफ्टी और सेंसेक्स तो 3 स्टॉक के ऊपर जाने पे ऊपर चले जाते हैं, बट उनका पैसा तो 3 के अलावा 40 स्टॉक में लगा हुआ है ना। उनका वो प्रोपोर्शन जो मैं वेटेज की बात कर रहा था वो वेटेज उतना नहीं है जितना निफ्टी के अंदर है। तो यही रीजन है कि हमें लगता है मार्केट ऊपर चला गया बट हमारा पोर्टफोलियो ऊपर नहीं जा रहा, बिकॉज हम लोग जनरली मिड कैप में करते हैं। अब कौन खरीदेगा एमआरएफ का स्टॉक जिसका भाव 82,000 होगा? कोई भी रिटेल इन्वेस्टर तो नहीं खरीदेगा 82,000 के ऊपर, राइट? तो अ रिटेल इन्वेस्टर ऑलवेज हैज अ साइकी कि मुझे म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू जाना है, तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन है। अब डाइवर्सिफिकेशन का फायदा ये है कि आपका रिस्क कम है, बट उसका नुकसान ये है कि आपका रिटर्न भी कम रहेगा प्रोपोर्शनेटली। तो इट इज नॉट अ वेरी फेयर एग्जाम्पल टू कंपेयर निफ्टी परफॉर्मेंस और बीएससी सेंसेक्स परफॉर्मेंस विद एनी ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम्स। ऑल्दो वो लोग बेंचमार्क उसी को मानते हैं, बट ये बहुत फेयर कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड टिपिकली अनलेस इट इज एन इंडेक्स फंड they diversify across lot of stocks which is flow 40 to 50, and because of that diversification they always tend to underperform the benchmark which is nifty and sensex. यही रीजन है कि आप लोगों का पोर्टफोलियो ऊपर नहीं जाता है, पर हमें लगता है कि यार सीएनबीसी में मार्केट तो ऊपर चला गया। Abhijit, lot of our members are asking if they want to invest in gold, how should they invest? Should they invest in physical gold, gold mutual funds, ETFs, or gold bonds? What do you think? I think gold ETF is the best way to invest, honestly, and they should invest. Now, whosoever asked this question, and to everyone, 1,000, 2,000 participants we have on this call, that please move your money from fixed deposit to either bonds or into gold. Else, it will be very tough for you to generate inflation-adjusted returns going forward. Gold पे भी we are bullish, and I think the ideal mode of investment in gold should be ETF. And bonds पे भी we are investing. I given you an example during my speech that if I do an FD in SBI today, my rate of return is 5%. But if I invest in the bond of SBI with 3-year horizon, my return is 7.2%, which is 50% higher than within SBI. So I need to choose not only right asset class, I need to choose right product category as well. Right? I'll build this example again. That even in debt mutual fund, when we say, most of the people say, हमने debt mutual fund में invest किया है. When we invest into debt mutual fund, even in debt mutual fund, we have 2 categories. One is called accrual mutual fund debt category, accrual debt mutual fund. Another is called duration debt mutual funds. Accrual के अंदर आप केवल corporate bond fund के अंदर पैसा लगाते हैं, corporate bonds में लगाते हैं, बैंकों के bond में लगाते हैं. बट जो ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड है उसके अंदर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाते हैं. अगर आप देखेंगे कि कई बार लोग बड़े सरप्राइज होते हैं, दे आस्क अस दिस क्वेश्चन कि सर मैंने डेट म्यूचुअल फंड में लगाया था, मेरा रिटर्न तो आया 7%, मेरे एक जानकार ने लगाया था, उनका रिटर्न आया 16%. ये कैसे हो सकता है? डेट में इतना वेरिएशन क्यों? तो देन वी ऑलवेज आंसर कि डेट के अंदर भी 2 कैटेगरीज होते हैं. आई थिंक यू विल फाइंड वन आर्टिकल इन इकोनॉमिक्स टाइम विद माय नेम वेयर आई एक्सप्लेन दिस ब्यूटीफुली. And what we call is debt mutual fund article in Economics Times. You will find it online. So it beautifully compare both the product category, and where, because in last 3 years we have seen the rate of interest is on declining cycle. So whenever there is a declining rate of interest cycle, then these duration mutual fund tend to perform well because they invested into government securities. And whenever the rate of interest goes down, the bond price goes up. That is the reason that mutual fund has given that duration mutual fund has given 16% return, and the person who has invested into accrual debt mutual fund, he only got 7% return, because that's only get a coupon interest. They are not being traded much, right? So that is a sincere advice. From FD, you either move to bond or you move to debt mutual fund to some extent, or move to gold if you have a vision till 2030. Gold will be the biggest multiplier
from here on again because we are bearish on US dollar, keeping next 15 year in mind. So gold will benefit ultimately. And it will give you far better return compared to an FD. But you cannot compare FD return versus a equity. Equity will give you, FD return, gold return versus equity. Equity will give you far better return even in the long run. Amitji, we are seeing investors generally are quite excited about IPOs, and here also we are getting a lot of questions on IPOs. I'm trying to club a few questions together for you. So what should investors do while investing in an IPO, and what are your thoughts on new age startups that are getting listed or are in the process of listing, something like a Nazara Tech or Zomato or Paytm, which would be coming up for IPO sometime in the future? देखिए, इसमें दो क्वेश्चन है. एक है आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए. यस, आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. दैट्स माय स्ट्रेट आंसर. बट आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है. नॉट ओनली इन आईपीओ, अगर आपको स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना है तो आपको चार चीजों का ध्यान रखना है आजकल के टाइम के अंदर. नंबर वन, कंपनी में या तो डेट ना हो या कम से कम हो, या इतना डेट हो कि वो एक साल के प्रॉफिट से कभी भी उसको पे कर सकती है. अगर इतना डेट है देन इट इज ओके. Otherwise, we should not get into that business, ideally, unless it is a very asset-light business model. Because अगर आप देखेंगे that Indian economy के अंदर भी काफी shifts आए हैं. 1950 से लेके 1980s तक हम एग्री इकोनॉमी थे. 1980 से लेके 2000 तक हम मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बने, और 2000 के बाद हम आईटी इकोनॉमी बन गए, और अब हम बनने जा रहे हैं फार्मा इकोनॉमी फॉर द वर्ल्ड. राइट? तो ये शिफ्ट होते हैं हर इकोनॉमी के अंदर. राइट? कि आपको पहले एग्री चलाता है, फिर आपका इंडस्ट्रियल आता है, फिर आपका एसेट लाइट मॉडल आता है लाइक आईटी. राइट? उसी तरीके से आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी कंपनी आप सिलेक्ट कर रहे हैं आईपीओ की, एक तो वो सही सेक्टर में होनी चाहिए. दैट सेक्टर शुड गो इन लाइन विद द इकोनॉमिक जीडीपी ऑफ इंडिया. So IT is a good sector for Indian economy because that's how we are known in the world. We are the IT hub for the world today. So if it is an IPO in say happiest mind we have seen, वो 300 रुपए का स्टॉक अभी 2000 का स्टॉक है ना IPO के बाद, right? So we first of all we need to see that we have to invest into right sector. I think उससे भी पहले हम देखते हैं right economy. So right economy I'm presuming we are investing in India because we are very bullish on India, right? So right economy, right sector, राइट बिजनेस मॉडल. बिजनेस मॉडल में आपको देखना है कि ये एसेट हैवी बिजनेस मॉडल है या एसेट लाइट मॉडल है. इंडिया में ये काफी चेंज आया है. 2008 से पहले जितनी भी निफ्टी कंपनियां थी वो एसेट हैवी बिजनेस मॉडल के अंदर थी, और 2009 के बाद निफ्टी की जितनी भी कंपनियां वो सब एसेट लाइट बिजनेस मॉडल के अंदर है. उनने प्लांट मशीनरी कम से कम, एक रिलायंस को आप हटा दो बिकॉज दे हैव रीगेन्ड इट, पर उससे पहले सब एसेट लाइट है. किसी पे बहुत बड़ा प्लांट मशीनरी नहीं है, किसी पे बहुत बड़ा एकड़ों में लैंड नहीं है, ऐसी कंपनियां निफ्टी में है ही नहीं. सभी कंपनियां फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड करती हैं, विच इज एसेट लाइट मॉडल. और फाइनेंशियल मार्केट की कंपनियों में, आईटी कंपनियों में केवल एक ही एसेट है, और वो है ह्यूमन बीइंग, टैलेंटेड ह्यूमन बीइंग. राइट? तो अपने को ऐसी कंपनियों में भी लगाना चाहिए जिसका सेक्टर इंडिया से कोइंसाइड करता हो, जिसके अंदर डेट कम से कम हो. ठीक है? और तीसरा जो है उसके अंदर एसेट लाइट मॉडल हो. अगर ऐसा कोई भी आईपीओ तो वी शुड इन्वेस्ट इन दैट आईपीओ फॉर श्योर. थैंक यू अमित. दैट्स अ फर्स्ट आंसर. जी बोलिए. नाउ माय सेकंड आंसर टू योर क्वेश्चन इज, ये जो नए जमाने के बिजनेस लिस्ट हो रहे हैं लाइक जोमैटो इज गेटिंग लिस्टेड, तो अभी तक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी या कोई भी प्रोफेशनल फ्रेटर्निटी ने अभी ऐसे किसी भी बिजनेस को वैल्यूएशन नहीं किया है जो लॉस मेकिंग हो. बट दिस इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन इंडियन मार्केट्स when we as Indian are thinking to invest into a loss-making businesses because we have learned something from Amazon or somewhere else. But this is going to be a shift, and we need to accept that shift as well, because somewhere these companies are going to dominate the market share in that respective industry which they are operating in. And today they may be in losses, but I am sure if you see that this company can become a market leader, number one, number two, in next 10 years, even if they are a bit negative today, we can invest in those stocks. But we have to be very, very, very selective on those stocks. We cannot recommend every stock to invest in IPO, which are coming with a new business model where they burn money or something like Zomato. So you have to choose your stock very, very carefully in this line.
This is the second answer of your question. Amit ji, I have a question to you. Sir. The people who are listening this very attentively are chartered accountants, and we propose to send this video to close to all of chartered accountants. So your message to chartered accountants, how they should invest money so that they can gainfully have an incremental capital. Your message, a very exhaustive message I would like, so that people listen to that in that tandem. Chartered accountants you can find in two ways. They can either be people who do investments, and now the council has allowed chartered accountants to do future option also for themselves, only not for the clients. So what is your suggestion how they could multiply their money, beating the inflation and yet being safe? So a person of your stature can very well advise, you know the client, you know the client's stature, the money they have, and the risk appetite they have. So I would like you to please. So I will use only two principles of investing in this line. If any chartered accountant who is less than 40 years, he should invest 40% into large cap straight away after this call today. And rest 60% he should invest into mid cap and small cap. I'm talking about only saving. Because they will save only in FDs or bonds or some other debt mutual fund and all that. So अगर आपका 40 का एज है तो आपको स्ट्रेट अवे आज ही एक्सपोजर लेना चाहिए लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर, नंबर 1. ठीक है. इसके अंदर एक बाइफिकेशन ये है क्योंकि आज मार्केट बहुत ऊंचा है, तो आप जो एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, आपको वो एसआईपी करनी है स्टॉक्स में. तो म्यूचुअल फंड की दिक्कत है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो 40 जगह पे डिवाइडेड है. कुछ स्टॉक अच्छा करेंगे, कुछ स्टॉक अच्छा नहीं करेंगे. ठीक है. तो मैं आपको 3 क्वालिटी स्टॉक दे देता हूं आज. ठीक है. आप उसमें एसआईपी कीजिए एंड आई थिंक you will remember this session for next 30 years for sure. I can make it so memorable, right? And so ये जो 40% आपका पैसा है ये आप 3 लार्ज कैप स्टॉक में लगा दें. अभी एक है हीरो मोटर कॉर्प जो आज भी बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है. नंबर 2 आप लगा दें आईटीसी के अंदर, लार्ज कैप प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूं. और नंबर 3 आप लगा दें भारतीय एयरटेल के अंदर. आपने आई थिंक क्वेश्चन भी पूछा था वो वाला. आई थिंक वो समय आएगा सर. And I think next 1 year you will hear that news from Bharti Airtel. Jitendra ji, this is for you, right? So you will get that news in next 1 year, right? Right. तो इन 3 स्टॉक्स में आप अपनी एसआईपी शुरू कर दें जो आपकी 40% की आपका एलोकेशन होगा लार्ज कैप, विच इज सेफेस्ट. आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी ना करें, उसके अंदर बहुत फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होता है और वो डाइवर्सिफिकेशन आपकी सारी रिटर्न्स को खत्म कर देता है. तो आपने सेफ्टी के साथ 3 बड़ी कंपनियों में पैसे लगा लिए जो कभी डूबने वाली नहीं है. अब रहा आपका 60% प्रोपोर्शन. उसके अंदर आप 30% अगर आप चाहें तो म्यूचुअल फंड लगा लें. ठीक है. 40 तो हो ही गया आपका, 60% रह गया. बाकी 60% के अंदर आप 3-4 स्टॉक्स में, एक बार मेरे बहुत सारे आर्टिकल है मनी कंट्रोल के ऊपर, अगर आप जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे अमित जैन आशिका तो आपको करीबन 150 से ऊपर आर्टिकल मिलेंगे, ग्लोबल मैगजीन्स के अंदर भी और इंडियन मैगजीन्स और मनी कंट्रोल और ये इकोनॉमिक्स टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर. तो वहां पे भी यू विल फाइंड आउट 3-4 गुड स्टॉक्स जहां पर अपनी एसआईपी आप कर सकते हैं. आप इस सिस्टम को रिलीजियसली फॉलो करें फॉर नेक्स्ट 20 years. बाय द टाइम यू बिकम 60, ट्रस्ट मी, you will not be worried about your retirement and your retirement or retirement expenses, the marriage of your children's, your home loan or whatever it is. You will be far ahead of anyone who has not followed this process which I just told you now. So that is the differentiator. So move your mutual fund SIP into a stock SIP, 40% into large cap and 60% into mid cap and small cap stocks. This is a very precise answer, but I think sir it's very straight. कोई गोलमोल बात नहीं है, कोई सेक्टर की बात नहीं की, स्टॉक के नाम बता दिए. सर मिड कैप की कंपनी नहीं बताई आपने. आई मिस्ड आउट सर. जो मिड कैप के जो 30% या 60% इन्वेस्ट करना है, द नेम ऑफ द कंपनी. देखिए अभी उसमें एक स्टॉक है वो ऑलरेडी बहुत चल चुका है, क्रिस्टल का. क्योंकि अगर इंडिया को आगे जाना है तो क्रिस्टल तो आगे जाएगा ही जाएगा. अगर किसी को पैसा लेना है, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपको पता है कि क्रिस्टल के अलावा किसका रिकमेंडेशन मानेंगे आप रेटिंग के लिए. ठीक है. क्रिस्टल में आप एसआईपी कर सकते हैं. एक कंपनी का नाम है IEX जो पावर एक्सचेंज के अंदर है, आप उसमें एसआईपी कर सकते हैं. एक है अपना CDSL जो डीमैट अकाउंट अपने जो खोलते हैं, वो तो अभी स्टॉक 200 का अभी 900 रुपए हो चुका है, बट एसआईपी के लिए ठीक है. अभी भी जब भी नीचे आए आपको एक डायरेक्शनल कॉल लेना है 2030 तक का. जैसे वो बुल होता है ना, बुल फोकस,
मुझे 2030 से पहले एसआईपी नहीं रोकनी है अपनी इन स्टॉक्स के अंदर, और जब गिरे तो एसआईपी का अमाउंट 3 गुना कर देना। आप इस प्रोसेस को फॉलो करें, ट्रस्ट मी, not only chartered accountant, you will beat lot of financial advisors as well. Right. This is what my advice is. Maybe we are running short of time. Maybe we'll take a couple of more questions from the audience and then we'll wrap up. Amit, you have been talking about sectors every now and then, and we have seen every bull market has a theme. 92 was cement, 2000 was TMT bull market, 2003 was real estate, construction and commodities. So what do you think when we talk about in 2025, what will be the theme of this bull market? Okay, so before sector, I will emphasize on business model. So whatever your investment need to be, they need to be in asset light business model. That's how Nifty has changed from 2008 till 2020. Now 80% of the companies, they have a asset light business model. तो आपको उन्हीं कंपनी को चूज करना है जिन पे बहुत बड़ा प्लांट मशीनरी हो सकता है ना हो, राइट, बट आपको, और डेट ना हो। अगर प्लांट एंड मशीनरी भी हो तो चलेगा, पर डेट नहीं होना चाहिए बुक्स के अंदर, ठीक है। तो आपको तो उस बिजनेस मॉडल के अंदर उस चीज को ध्यान रखना है। नंबर 2, उन कंपनी को चूज करना है जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से ऊपर है और डेट नहीं है, ठीक है। तीसरा, आपको ऐसी कंपनी को चूज करना है उस थीम के अंदर जिनके अंदर जिस सेक्टर की ग्रोथ इंडिया की इकोनॉमी के साथ मैच करती हो। जैसे आज ऐसे 3-4 सेक्टर हमें निकल के आते हैं आज के टाइम में। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फार्मा इज नंबर 1, बाय 2030 यू विल सी, जैसा कि 1996 से लेके अब तक प्राइवेट बैंक्स हैज गिवन द बेस्ट रिटर्न फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट, फॉलोड बाय आईटी सेक्टर हैज गिवन द बेस्ट रिटर्न फॉर द मार्केट। सो अशोक जी ने एचडीएफसी की बात की थी, मैं इसलिए उस पर टच बेस कर रहा हूं। तो प्राइवेट सेक्टर अब तक का बेस्ट रिटर्न दिया है, फॉलोड बाय आईटी सेक्टर। अभी इंडिया के कस्प 2 पॉइंट हैं। एक है फार्मास्यूटिकल, जहां पे हम लोग शायद आने वाले 10 साल के अंदर लीडर होंगे, 10 से 15 साल के अंदर। और दूसरा है स्पेशलिटी केमिकल, बिकॉज ये मार्केट काफी हद तक इंडिया से चाइना से इंडिया मूव करेगी, एंड इट इज जस्ट अ बिगिनिंग। काफी स्टॉक 4-5 गुना हो चुके हैं, बट स्टिल देयर इज अ स्कोप। अगर हम इन 2 सेक्टर पे फोकस करते हैं अभी, और ऑफकोर्स सीमेंट और एनीथिंग रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज वो सेक्टर्स अब दे विल स्टार्ट रिवाइविंग इन। बट आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा इंफ्रा कंपनियों के अंदर कि डेट कम से कम हो, या वो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हो इंफ्रा से रिलेटेड चीजों का, मोर इन कमोडिटाइज बिजनेस बट लेसर लोन। ये 3 चीजें अच्छा करेंगी। 4th, आईटी विल कंटिन्यू टू डू वेल। आईटी के अंदर केवल एक शिफ्ट आएगा। 1996 से लेके अब तक इन्फोसिस और टीसीएस का नाम सुनते हैं, बिकॉज उस वक्त सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक नई चीज थी। जब हम 2020 की बात कर रहे हैं तो नई चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको उन आईटी कंपनियों में पैसा लगाना है जिनका 30 to 40% रेवेन्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आता है, एंड प्रॉब्ली हैप्पीएस्ट माइंड इज वन ऑफ द एग्जांपल देयर। हमने एक कंपनी को एडवाइस किया था, इंटेलेक्ट डिजाइन, 50 रुपए का भाव था उसका मार्च 2020 के अंदर, अभी वो 700 रुपए का भाव है, ठीक है। ऑन रिकॉर्ड यू विल फाइंड इट, राइट। तो आपको ऐसी कंपनी में पैसा लगाना है जो एआई से अपना 30% रेवेन्यू कमाते हो। अगर आपने ये सेक्टर डिसाइड कर लिए और ये बिजनेस मॉडल को आपने स्टडी कर लिया, आई एम श्योर यू आर हियर फॉर लॉन्ग रन। यू विल बीट एनी एसेट क्लास और एनी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस even in equities. Forget about debt and gold. Maybe we are seeing a lot of experts talking about commodities super cycle starting once again, whether it's in ferrous, non-ferrous, oil, agri commodities. What are your thoughts upon this? I think this cycle will go because ये $0 trillion print हुआ है. This will first go into commodities only, right? So we'll see all sort of commodities moving up, or will it be concentrated in few, or how will it work? Yeah, so there are only 2 commodities. One is precious metal. That will take a breather because economic growth is reviving. That will only go up once there is a fear in the market. Another is industrial commodity, which is copper, zinc, aluminum, lead, right? They will continue to perform well because there is a revival in infrastructure across the world. Even US has come up with a $5 trillion, $3 trillion plan to spend on infrastructure. Europe is also coming up with the same. Indian government is anyway committed for 25 lakh crore for the infrastructure development, right?
So these industrial commodities will continue to do well. However, you need to be cautious while taking any position in future and option. So in future and option, it is more a news-driven market. So if you can take delivery in physical, that may be advisable in case if you can take that. But otherwise, commodities will have a bull run because so much money is being printed, which will ultimately get into commodity market. Tomaji, how would you play commodity cycle? Would you play directly by investing into commodities, or would you like to play through their derivatives in stock markets? I will invest in commodity stocks. You will check in commodity stocks. So are you bullish on these oil marketing companies and oil exploration companies, which are predominantly PSU companies? देखिए 2030 का जो बेस रहेगा वो ऑयल बेस नहीं रहेगा. India will move from oil based economy to a gas based economy by 2030. That's a hint I am giving it to you. You should choose those stocks keeping 2030 in mind. India will be a gas based economy or renewable resource based economy, right? So you should invest only in those stocks. Oil is the past. Thank you, Amit. Thank you for all your presentation that you gave early and answering such a long list of our questions. We still have a long list of questions and I can continue for 2 more hours. But now we have time constraints and I'm afraid that we'll have to wrap up. I'll request maybe the branch chairman to conduct another long session with you so that we can address more queries from the audience. And now we'll have one more session, Amit, a larger session with a bigger impetus so that your thoughts are resonated to all people across. We'll do that, sir. Sure, Anand. Pleasure. It was always a pleasure because it's always a privilege to be part of this fraternity because I think that's the most privileged fraternity in Indian professionals. Thank you so much. Sir. Sumit will propose a formal vote of thanks. Neeraj ji, please ask. Now I will request Sumit ji to prepare a formal vote of thanks. Sumit ji. Thank you, Neeraj ji, for giving me this opportunity. Respected Central Council member Charanjot Singh Nanda ji, our panelist Amit Jain ji, founder Ashika Wealth, and CA Ashok Kumar ji, promoter and executive chairman Globe Capital Market. Thank you all for having such a wonderful and a curated deliberation. I think this presentation was the best we can have on this particular topic, and all those who have listened to this must have deeply benefited from it. I can just give you an example. It has helped us to choose between the two scenarios. The first scenario is in 1994, if you have invested 10,000 in Infosys, you must have 11.6 crore. And if you have invested 1 lakh in these two companies in past 5 years, you have got nothing. That is DHFL and Videocom. So it has reminded me of the principle that Charanjot Singh Nanda ji and Amit Jain ji has taught us, that the entry and exit both are very important. And next is the liquidity, which is also a very important factor. And when to have a liquid, cash in a portfolio, and when to have the stocks in a portfolio. I just give you an example. In 2018, when there was a small cap and the mid cap frenzy, I earned 120% profit in 6 months. But that was only a book profit. I never booked it. So it was just wiped out. It wiped out. And still I am not able to recover that particular profit. So I just thank you for teaching us all the principles. And this deliberations hold a very special importance, because in financial year 21, we have around 14.3 million new demat accounts as compared to the 4.9 million accounts in FY20. So this avenue just open us another avenue for chartered accountants like us, for as an investor and as a guiding principle to our clients also. So once again, I thank you from core of my heart for organizing such a beautiful and a knowledgeable deliberation. And there is a formal request from my side also, that we want to arrange this session again for our branch also, so that all the community can benefit from this. Sure. Thank you so much. Really appreciate that. Yeah. Thank you, sir. Thank you, Nanda sir. Thank you, Neeraj ji. Thank you, Gyan ji. And thank you, Vansal sir, for being with us. Thanks a lot. Thank you, Amit ji, and thank you, Nanda ji.
Thank you, Nanda ji. Thank you, Jitendra ji. Thank you, everyone. Today's webinar, it was actually really very wonderful. Thank you, sir.